Hello students, today we are going to study epithet. Epithet involves the use of a descriptive word or phrase that highlights a particular characteristic of a person, place or thing and is often used for it. Also, it is known as a byname or descriptive title. एपिथेट एडजेक्टिव्स या डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स होते हैं जो कि किसी पर्सन प्लेस और थिंग को डिस्क्राइब करते हैं. सो आर ऑल एडजेक्टिव्स एपिथेट्स? क्या सारे एडजेक्टिव्स एपिथेट्स होते हैं? नहीं, सारे एडजेक्टिव्स एपिथेट्स नहीं होते. ऐसे एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव फ्रेजेस जो कि किसी नाउन के लिए रिपीटेडली बार बार यूज होते हैं उन्हें हम एपिथेट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जापान is known as the land of the rising sun. So land of the rising sun is the epithet for Japan. In Romeo and Juliet, Shakespeare has described throughout the play Romeo and Juliet as star-crossed lovers. So star-crossed lovers is an epithet for Romeo and Juliet. Alexander the Great is the epithet for Alexander. King Richard was given the epithet the Lion Heart. The word epithet comes from the Greek word epithetos, which means attributed or added. An epithet is an added word or an attribution of certain qualities to a person. So why epithets are used? Firstly, epithets are used in spoken conversation or written work to create a more dramatic effect. Secondly, it is a device of characterization. It makes characterization more vivid and helps to highlight an attribute of a person or object. किसी भी कैरेक्टर को एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट देना और उसको हाईलाइट करना, ये राइटर्स किसके थ्रू करते हैं? एपिथेट्स के थ्रू. इन पोएट्री, the use of epithets makes the language more embellished and impressive. Epithets can be of different types. One of the types of epithets is Homeric epithet, which is also known as fixed epithet. फिक्स्ड एपिथेट्स एपिक्स या महाकाव्य में देखने को मिलते हैं, जहां एक ही शब्द बार बार एक कैरेक्टर के लिए यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, होमर की एपिक ओडिसी में ओडेसियस is repeatedly referred to as many-minded. Penelope is repeatedly referred to as prudent and Telemachus as sound-minded. अगर हम इंडियन एपिक्स जैसे कि महाभारत का एग्जाम्पल ले तो युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है. सो धर्मराज इज द एपिथेट फॉर युधिष्ठिर. सिमिलरली, रामायण में हनुमान जी को पवन पुत्र हनुमान कहा गया है. सो पवन पुत्र इज द एपिथेट फॉर लॉर्ड हनुमान. फिक्स्ड एपिथेट्स को हम होमरिक एपिथेट भी कहते हैं. The other form of epithets is kenning. Kenning is a two-word phrase that metaphorically describes an object. Kennings are commonly found in Old English and Old Norse poetry.
सो कैनिंग क्या होते हैं? कैनिंग ऐसे एपिथेट्स होते हैं या एडजेक्टिव फ्रेजेस होते हैं जो कि दो वर्ड से बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्काई कैंडल इज एन इज अ कैनिंग फॉर द सन। स्काई कैंडल में आप देख सकते हो दे आर टू वर्ड्स जिनको जोड़ के एक फ्रेज बनाया गया है, और ये जो फ्रेज है वो किसके लिए यूज हो रहा है? सन के लिए। तो सन का जो कैनिंग है वो क्या होगा? स्काई कैंडल। Bookworm is a more modern kenning in the English language for a voracious reader. एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, अगर किसी ने चश्मा लगाया है तो आप उसको फोर आईज या चार आंखों वाला कहते हो। सो दिस फोर आईज इज अगेन अ फ्रेज दैट इज मेड ऑफ टू वर्ड्स एंड इज अ कैनिंग फॉर अ बी spectacled person. Along with epithet, today we are also going to discuss transferred epithet because both the terms are related to each other. So what is a transferred epithet? A transferred epithet, as the name suggests, is a figure of speech formed by the transfer of an epithet. The term epithet refers to an adjective or a phrase that modifies a noun in the sentence, most probably the subject. This epithet, however, is transferred from the noun it is actually meant to describe to another noun in the sentence in order to form a transferred epithet. For example, the expression "a sleepless pillow" is an example of transferred epithet. How? A pillow cannot be sleepless. So, the epithet "sleepless pillow" is not suitable or appropriate. स्लीपलेस वो पर्सन होता है जो कि पिलो को यूज कर रहा है, ना कि पिलो। तो हम यहाँ एडजेक्टिव का ट्रांसफर देख सकते हैं। जो एडजेक्टिव हमें मैन के लिए यूज करना चाहिए था वो हमने पिलो के लिए यूज किया है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। टू स्टेट सिंपली, transferred epithet is a figure of speech that refers to the shifting or transfer of an epithet from its proper subject to another associated with it. The transferred epithet is also known as hypallage. Hypallage is a Greek word that means interchange. The implication is the interchange of the position of word or words. So what are the characteristics of transferred epithet? Firstly, that there is a transfer of epithet. आप देखोगे कि जो epithet है वो अपनी प्रॉपर जगह न लगा के उसको मूव किया गया है. Then the second characteristic is the epithet is transferred from its proper subject to another accompanying thing. ट्रांसफर कैसा होता है? एक नाउन से दूसरे नाउन को. एंड द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज ये दोनों नाउन जिसमें ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. देन द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज जनरली जिस नाउन को एपिथेट ट्रांसफर किया जाता है वो इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग होता है. जैसे कि आपने स्लीपलेस पिलो के एग्जाम्पल में देखा, एपिथेट मैन से पिलो को ट्रांसफर हो गया और पिलो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है जिसके कोई इमोशंस नहीं होते, जो कभी सोती नहीं है. द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड epithet
is from a very popular poem, Elegy written in a country churchyard. This is a line from the poem. The ploughman homeward plods his weary way. This is a transferred epithet because here the epithet weary, which properly belongs to the noun ploughman, weary means tired. So टायर्ड कौन हो सकता है? प्लोमैन. जबकि ये एपिथेट्स किसके लिए यूज किया गया है? वे के लिए, रास्ते के लिए. और आपको पता है रास्ता एक इनएनिमेट, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है जो कि कभी टायर्ड फील नहीं कर सकता. सो दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ transferred epithet. Some more examples of transferred epithets are sleepless nights, wide-eyed amazement. He pointed an angry finger at me. So here you can see the finger, which is again inanimate, does not have any kind of emotions, is described as angry as opposed to the person to whom the finger belongs. है ना. यहाँ पे जो एंग्री एडजेक्टिव है वो एक्चुअली ही के लिए होना चाहिए था, उस पर्सन के लिए होना चाहिए था जिसकी फिंगर की हम बात कर रहे हैं, ना कि फिंगर के लिए. He looked at him through concerned eyes. So I hope you liked this video. Keep studying, working hard. Thank you for watching the video and do not forget to like and subscribe.